Tiruchi Siva Saab, and all our respected honorable guests over here. I am Dr. Suraj Mandal, teaching in Delhi University, and I am also grandson of late BP Mandal, former Chief Minister of Bihar. Today, I, along with many friends, we had come to pay our tributes to M. Karunanidhi Sahab, Dr. Kalengar. Also because late BP Mandal was close to him, and my another relative, Daroga Rai, who was Chief Minister of Bihar, also had a very cordial relation with Karunanidhi Sahab. And the basis of that relationship was the fight for social justice, which M. Stalin Sahab is continuing, and we are proud of the great fight for social justice which M. Karunanidhi Sahab and Stalin Sahab are continuing. And today is a very crucial day because tomorrow the fight for social justice in this country will be seen in the terms of results. We just hope that tomorrow also the country will pay tributes to M. Karunanidhi Sahab by electing India Alliance. Thank you. Professor Ratan Lal will pay homage to our leader Dr. Kalengar. First of all, I must congratulate Karunanidhi Sahab की जन्मदिन की बधाई. And I am a student of history. Dr. Ambedkar met Periyar Sahab in 1944, September 1944, and he discussed with him at length about social justice. एंड डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि ये मूवमेंट जो है, जस्टिस पार्टी उस समय थी, ये पैन इंडिया लेवल पे ये मूवमेंट होना चाहिए. मैं समझता हूँ कि जो मॉडल तमिलनाडु में है, करुणानिधि साहब का मॉडल, पेरियार साहब का मॉडल, जिसको आगे स्टालिन साहब, विल्सन साहब, तमाम ऐसे लोग बढ़ा रहे हैं और हम लोग लगातार विल्सन साहब के साथ काम कर रहे हैं. तो मैं समझता हूँ कि ये मॉडल जो है ये ऑल इंडिया लेवल पे रेप्लिकेट होना चाहिए. इट मस्ट बी रेप्लिकेटेड एट ऑल इंडिया लेवल, एंड दैट विल बी द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रिब्यूट्स टू करुणानिधि साहब. शुक्रिया, थैंक यू. सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने वाले हम करुणानिधि की जयंती पर शुभकामनाएं देता हूँ. शुक्रिया.